Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss lecture number 5. It consists of instrument compartments, instrument components. उसके कौन कौन से हिस्से हैं जो एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और उसकी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन, इमिशन, फ्लोरेसेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज और ऑल अप्लाइड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं अब एक्स रेज मेथड के कि उसमें एक्स रेज एब्जॉर्प्शन, एक्स रेज इमिशन, एक्स रेज फ्लोरेसेंस, एक्स रेज डिफ्रैक्शन। Instruments for these applications contain components that are analogous in function to the 5 components of instrument for optical spectroscopic measurements. These components include यानी जिस तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 5 पार्ट्स होते हैं उसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन, सैंपल होल्डर, वेवलेंथ सेलेक्टर, डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइस, ये 5 कंपोनेंट है जो कि हर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर या फोटोमीटर में होते हैं। तो इसमें भी ये 5 पार्ट्स होते हैं विच इंक्लूड ए सोर्स ऑफ रेडिएशन या एक्स रेज, ए डिवाइस फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वेवलेंथ रेंज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसको वेवलेंथ सेलेक्टर का नाम दिया जाता है, ए सैंपल होल्डर, ए रेडिएशन डिटेक्टर और ट्रांसड्यूटर, ए सिग्नल प्रोसेसर और रीड आउट डिवाइस। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि बाकी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज़ किया जाता है। दीज कंपोनेंट्स differ considerably in detail from the corresponding optical component कि ये उससे थोड़े से different भी है। Their function however are the same and the ways they combine to form instrument are often similar to those shown in figure 7.1 कि उसका जो फंक्शन है वो तकरीबन सेम होता है लेकिन उसकी अरेंजमेंट में थोड़ी सी वेरिएशन होती है जिस तरह फिगर 7 में .1 में नज़र आ रहा है। अब ये सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर, सैंपल डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइस, ये फॉर एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट, और ये जो है ये सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर, सैंपल होल्डर, वेवलेंथ सेलेक्टर, डिटेक्टर, ये फॉर फ्लोरेसेंस, इसमें 2 वेवलेंथ सेलेक्टर यूज़ किया जाता है। और ये जो थर्ड है कि सैंपल, सोर्स ऑफ रेडिएशन और फिर उसके वेवलेंथ सेलेक्टर, डिटेक्टर, रीड आउट डिवाइस, दिस फॉर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये इसकी अरेंजमेंट में थोड़ी सी वो अरेंजमेंट डिफरेंट होती है फ्राम वन एंड अदर, बाकी कंपोनेंट जो है वो सेम होते हैं। As with optical instruments, both X-rays photometer and spectrophotometer are encountered. The first using filter and the second using monochromator to transmit radiation of the desired wavelength from the sources. इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फोटोमीटर, इसमें फिल्टर एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर और इसमें मोनोक्रोमेटर एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर यूज़ किया जाता है। इन एडिशन हाउएवर ए थर्ड मेथड इज़ अवेलेबल फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोलेटेड पोर्शन ऑफ द एक्स रे स्पेक्ट्रम। एक और टेक्निक इसमें या एक और कंपोनेंट जो है उसमें यूज़ किया जाता है और वो है फॉर आइसोलेशन ऑफ द एक्स रेस। हियर आइसोलेशन या वेवलेंथ सेलेक्टर जिसको हम कहते हैं, जो कि वेवलेंथ को अरेंज कर लेते हैं देयर वेवलेंथ कि इसका वेवलेंथ इतना है तो उसको डिस्पर्स कर लेते हैं या आइसोलेट करते हैं। हियर आइसोलेशन इज़ अचीव्ड electronically with devices that discriminate among various parts of a spectrum based on energy rather than wavelength of the radiation।
कि इसमें एनर्जी के बेस पे हम रेडिएशन को डिवाइड कर लेते हैं। दस एक्स रेज इंस्ट्रूमेंट आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वेवलेंथ डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट और एनर्जी डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन द मेथड बाय विच दे रिजॉल्व स्पेक्ट्रा। एक इसमें वेवलेंथ डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा एनर्जी डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। अब आते हैं सोर्सेज, कौन कौन सी सोर्सेज यूज़ होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर यूज्ड इन एक्सरेज इंस्ट्रूमेंट। एक्सरेज ट्यूब या सिंपल ट्यूब्स, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, the third one is secondary fluorescence sources। अब आते हैं कि एक्सरेज ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। The most common source of X-rays for analytical work is the X-rays tube, sometimes called a college tube, which can take a variety of shapes and form. One design is shown schematically in figure 12.7 के एक्सरेज ट्यूब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एक्सरेज। एन एक्सरे source is a highly evacuated tube in which is mounted fixed a tungsten filament cathode and a massive anode, कि इसमें एक कैथोड और दूसरा एनोड होता है। The electrons are emitted from the cathode which strike on the anode, and the electrons the atoms of the anode is excited. The anode generally consists of a heavy block of copper with a metal target। इसको टारगेट का नाम भी देते हैं, टारगेट के एनोड। टारगेट plated on or embedded in the surface of the copper। कॉपर होता है, फिर उसकी ऊपर जो है टारगेट मेटल की कोटिंग करते हैं या उसको एम्बेडेड करते हैं। ये दिस इज़ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द एक्सरेज ट्यूब। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ये कैथोड है और ये मेटल टारगेट या एनोड है, और ये उसका जो है विंडो है, बेरिलियम विंडो है जिससे एक्सरेज निकलती है। फोकसिंग कप, ये इवेक्यूएटेड ट्यूब, सारा ट्यूब है। ये टंगस्टन फिलामेंट कैथोड है, ये फिलामेंट हीटिंग सर्किट, हाई वोल्टेज, ये बाकी चीज़ें हैं या एक्सेसरीज है विच is used for to supply the power to the tungsten filament. Target material include such metal as tungsten, chromium, copper, molybdenum, rhodium, scandium, silver, iron and cobalt. These are used as a target. Separate circuits are used to heat the filament and to accelerate the electrons to the target. The heater circuit provide the means for controlling the intensity of the emitted X-rays, whereas the accelerating voltage determine their energy or wavelength. For quantitative work, both circuits must be operated with stabilized power supplies that control the current or the voltage to 0.1% relative. The production of X-rays by electron bombardment is a highly inefficient process. This is not an efficient process. Why? Because less than 1% of the electrical power is converted to radiant power, the remainder being dissipated as heat। इसलिए यानी 1% जो है वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। As a result, until relatively recently, water cooling of the anodes of X-rays tube was required। इसलिए उसके ऊपर जो है
वाटर कूलिंग जैकेट लगाया जाता है, क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसको ख़त्म करने के लिए या डिसिपेट करने के लिए वाटर कूलेंट जैकेट लगाते हैं. With modern equipment, however, cooling is often unnecessary because tubes can be operated at less than 50 watt of power, substantially lower than the 1 kilowatt or more of high power tube. This reduction in power is made possible by the greater sensitivity of modern X-rays transducer. चूँकि आजकल वाटर कूलेंट जो है वो नहीं लगाए जाते, इसलिए कि वो कम वाट पे हम काम करते हैं. ए वैरायटी. अब दूसरा जो है, ये तो हमने एक्स ट्यूब के बारे में पढ़ा. अब रेडियो आइसोटोप्स के बारे में कि वो एक्सरेज को भी इमिट करता है. ए वैरायटी ऑफ radioactive substances have been used as source in X or F X-rays, fluorescence and absorption method. ये हमने टेबल 12.2 में डिस्कस किया है. Generally, the radioisotope is encapsulated to prevent contamination of the laboratory and shielded to absorb radiation in all but certain direction. जो रेडियो आइसोटोप है उसको इनकेप्सुलेट करते हैं ताकि एक्सरेज जो है, चूँकि एक्सरेज इज़ हाईली पावरफुल और हार्मफुल एक्सरेज है, तो इसलिए लेबॉर्ट्री में उसका जो है स्कैटर्ड होना या प्रोपेगेट होना ये अच्छा नहीं है. इसलिए उसको इनकेप्सुलेट करते हैं ताकि वो एक ख़ास डायरेक्शन जो कि हमें रिक्वायर्ड है कि उसी डायरेक्शन से पास हो जाए, बाकी डायरेक्शन से वो उसको प्रिवेंट किया जाए. मेनी ऑफ द बेस्ट रेडियो एक्टिव sources provide simple line spectra, other produce a continuum. और सी टेबल 12.2 जो कि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चरों में डिस्कस किया है. Because of the shape of the X-rays absorption curve, a given radioisotope will be suitable for excitation of fluorescence or for absorption study for a range of elements. For example, a source producing a line in the region between 0.3 and 0.47 angstrom is suitable for fluorescence or absorption study involving the K absorption edge for silver. सी फिगर 12.5 ये भी हमने डिस्कस किया है. Sensitivity improves as the wavelength of the source line approach absorption edge. कि उसकी सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है अगर वो एब्जॉर्प्शन एज जो हमने पढ़ा है उसके करीब करीब आ जाए या उस तक पहुंच जाए. आयोडीन 250 with a line at 0.46 angstrom is ideal for determining silver from this standpoint, the position for which someone is able to view a scene or an object. तो ये iodine is the best one. अब आते हैं कि सेकेंडरी फ्लोरेसेंट सोर्सेस क्या है. In some application, the fluorescence spectrum of an element that has been excited by radiation from an X-ray tube serve as a source for absorption or fluorescence studies. के fluorescence secondary fluorescent source भी यूज़ किया जाता है as a source of X-ray. This arrangement has the advantage of eliminating the continuum emitted by the primary source. चूँकि this is more specific as compared to the other. जो एक्सरेज ट्यूब है या दूसरी सोर्सेज है उससे दूसरे रेडिएशन भी इमिट होते हैं, लेकिन जो फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंट सोर्सेज है उससे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएशन पास होते. ये जस्ट लाइक हेलो कैथोड लैम्प जो है उसी तरह जो
इससे वही रेडिएशन इमिट होता है जो कि जिस एलिमेंट का है. तो दिस इज़ मोर स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू द अदर. फॉर एग्जाम्पल एन एक्स-रेज ट्यूब विद ए टंगस्टन टारगेट, फिगर 12.1 जो हमने डिस्कस किए हैं, could be used to excite the K alpha and K beta lines of molybdenum, figure 12.2 जो हमने already discuss किए हैं. The resulting fluorescent spectrum would then be similar to the spectrum in the figure 12.2 except that the continuum would be absent. फिर वो उसमें continuum जो है वो absent होता है. तो आज का जो ये लेक्चर था, दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ द एक्स-रेज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. तो उसमें हमने उसकी कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं कि देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स-रेज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. उसमें सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइस. फिर हमने उसमें सिर्फ एक ही जो है कंपोनेंट डिस्कस किया है, वो है सोर्स ऑफ एक्स-रेज रेडिएशन. और फिर उसमें हमने देयर आर 3 टाइप्स. वन इज़ द एक्स-रेज ट्यूब एंड द सेकंड इज़ द second was the isotopes and the third one is the secondary fluorescent source. तो आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया. थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस.